Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. So today we'll discuss about the transcription. Today we'll discuss about the remaining part, and that is remember the we have already seen the replication of DNA. So we have seen nucleic acid chapter from biochemistry. From that we have seen the nucleic acid, what is meant by DNA, what is meant by RNA, right? We have seen this. After that we have also seen the replication, right? We have seen the replication also. After that we have seen the replication also. So last time, this was our last lecture, replication. So after the replication, today we will discuss the remaining point. So today we will discuss about the mutations in the genes, DNA damages, repairs performed by your own body to the damaged DNA. So we are discussing about the biochemistry of nucleic acid. In that we have already seen the basics, what do you mean by nucleic acid, what are the DNA, types of DNA, properties of DNA, then RNA also we have seen. After that we have seen the what do you mean by central after that we have seen what do you mean by central dogma of life or central dogma of your molecular biology, right? So DNA will be replicated and identical copies of DNA will be made. That is known as a replication. From DNA, from double stranded DNA, a single stranded mRNA or single stranded RNA is made. From DNA, RNA is made, that is a ribonucleic acid, and that process is known as transcription. And from the RNA, proteins are made, that process is known as translation. So what do you mean by central dogma of your molecular biology or central dogma of your life? So making of identical copies of DNA by the process of replication, then making of RNA molecules from the DNA by the process of transcription, and making of or synthesis of proteins or synthesis of proteins from the RNA is known as a translation. And the interrelationship between DNA, RNA and proteins, the interrelationship between DNA, RNA and proteins are known as a central dogma of life, So we have discussed already about the replication of DNA. Now today we will discuss the DNA damages, mutations in the DNA, and then transcription for the GPAT Niper DI Pharmacist, right? So first of all, what do you mean by mutation? What do you mean by mutation? So mutation is nothing but the change in the gene or alteration of gene. Gene means what? Gene is nothing but the DNA. So change in the structure, change in the basis, or alteration in the basis, either addition or deletion of the DNA is known as a mutation. Now mutation क्यों होता है? Mutation may be because of the either environmental factors, or it may be due to a free radicals, or it may be due to some drugs, it may be due to environmental factors, it may be due to your drugs, it may be due to agents like physical agent, chemical agents, radiations. So these agents are known as the mutagens, and mutation leads to cancer.
म्यूटेशन का कॉन्सिक्वेंस होता है आपका कैंसर. सो म्यूटेशन और ऑफ टू टाइप. म्यूटेशन मीन्स अल्टरेशन और चेंज इन द जीन स्ट्रक्चर और डीएनए स्ट्रक्चर, so known as a mutation. Though DNA is replicated with a high fidelity, है ना, कि डीएनए का रेप्लिकेशन बहुत ही प्रिसाइज होता है, बहुत ही एक्यूरेट होता है इन आवर बॉडी, बट देयर माइट बी सम errors, there might be some mistakes, there might be some faulty DNA synthesis, so that is nothing but the mutation. Now that that error or that fault in the DNA or inaccurate DNA also may be synthesized, or it may be due to different factors like external environmental factors, chemicals, radiations, right? So that is known as a mutation. So mutations are of two type. So first one is known as a point mutation. Point mutation means alteration in the DNA at a single point. Alteration in the DNA at a single base pair, single point. Now frame shift mutation. Frame shift mutation means, so either addition or deletion of particular sequence of the nucleotide in the DNA. डीएनए में पर्टिकुलर सीक्वेंस ऐड हो गया, फिर डिलीट हो गया, एक पर्टिकुलर फ्रेम ऐड हो गया, डिलीट हो गया, तो उसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. पॉइंट म्यूटेशन मतलब क्या, देयर माइट बी आइदर डिलीशन और इंसर्शन एट अ वन पॉइंट, वन बेस पे, नोन एज अ पॉइंट म्यूटेशन. तो पॉइंट म्यूटेशन आल्सो देयर आर टू टाइप, ट्रांजिशंस एंड ट्रांसवर्शंस. Transitions and transversions, ये क्या होता है, we'll see, don't worry, we'll see it about in the few upcoming slides, we'll see about this. Then transversions are also divided into three types. First one is a silent mutation, second one is a missense mutation, and third one is a nonsense mutations, right? So mutations are of two type, point mutation, frame shift mutation. Point mutation further divided into transitions and transversions. So transversions further divided into three type, silent mutations, missense mutations and nonsense mutations. So mutations क्यों होता है, mutations are because of the either faulty DNA replication or faulty DNA synthesis, or it may be due to external environmental factor or chemicals or radiations, right? Now if there is a damage to DNA, damage अगर हो गया, mutation मतलब ये भी है damage to DNA. So if damage to the DNA, what are the reasons for damage? So we'll see damage to the DNA. So major types of DNA damage. So देखो DNA को damage हो सकता है, किस टाइप से हो सकता है, major types of DNA damage. First, single base alteration, मतलब क्या, यहाँ पे एक सिंगल जो न्यूक्लियोटाइड बेस है, इधर प्यूरिन और pyrimidine, जैसे थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, तो guanine, adenine, guanine, thymine, cytosine. So single base alteration may be because of the deamination. So spontaneous DNA amination might be there at a physiological pH. Depurination मतलब प्यूरिन उसका रिमूव हो जाएगा. बेस अल्काइलेशन, तो जो बेस है उसके ऊपर अल्कलाइजेशन हो जाएगा. और इंसर्शन और डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ बेस एनालॉग, दैट इज अ सिंगल बेस अल्टरेशन. तो काइंड ऑफ डैमेज टू द डीएनए. सेकंड होता है टू बेस अल्टरेशन, यहाँ पे दो न्यूक्लियोटाइड बेसिस अल्टर हो जाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ डाइमर. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू एक्सपोज योरसेल्फ टू यूवी लाइट, यूवी लाइट विल इंड्यूस pyrimidine डाइमर फॉर्मेशन. आपके डीएनए में क्या होगा, डाइमर बन जाएगा pyrimidine का बिकॉज ऑफ द यूवी लाइट. तो यूवी लाइट विल इंड्यूस डाइमराइजेशन ऑफ pyrimidine, राइट? सो काइंड ऑफ डैमेज टू द डीएनए. अगेन थर्ड वन इज अ चेन ब्रेक. तो ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, like for example peroxide ions, free radical formation. Then ionizing radiations, they can cause chain break in the DNA. DNA को break कर देंगे.
न्यूक्लियोटाइड चेंज जो है वो ब्रेक कर रहे हैं. ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, आयोनाइजिंग रेडिएशंस. देन क्रॉस लिंकेज, some factor can cause cross linking of the base pair between the base pair in the same or opposite strand. So cross linking of base pair in the same strand or either in an opposite strand or between the DNA and protein molecule. So these are the different types of DNA damage. So mutations also leads to DNA damage. We'll see the mutation detail in the detail, whatever is important for GPAT Niper. We go types of mutations. So mutation is nothing but the change in the DNA structure of a gene. Change in the DNA structure of a gene. Now the agent or the factor which can induce the mutation known as a mutagen. Yeah. The mutagen is a factor that can induce a mutation. The mutagen or mutagenesis leads to cancer. Now as I told you, there are type of mutation. They say point mutation and frame shift mutation. Point mutation means what? So point mutation means replacement of one base pair with the another, है ना. Replacement of one base pair, जैसे adenine thymine है ना, 80 ये base pair है तो वो उसका replacement GC से हुआ है, guanine cytosine से हुआ है, like that. So replacement of one base pair with another, that is known as a point mutation. And there are two type of point mutation. पहला है आपका ट्रांजिशंस. ट्रांजिशंस म्यूटेशन में क्या होता है? इन दिस केस प्यूरिन और पिरिमिडिन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर. मतलब ट्रांजिशंस मतलब क्या? एक तो प्यूरिन जो है वो पिरिमिडिन से रिप्लेस होगा या फिर पिरिमिडिन जो है वो प्यूरिन से रिप्लेस होगा इन द डीएनए. तो इन द डीएनए इफ प्यूरिन्स आर रिप्लेस्ड बाय पिरिमिडिन और पिरिमिडिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन एंड वाइस वर्सा. तो इन दिस केस ऑफ इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशंस, है ना, transition in this type of mutation either purine or pyrimidine is replaced by one another. Okay, now second is nothing but the transversion. Transversion क्या होता है? So transversion is nothing but the replacement of purine with pyrimidine and vice versa. है ना, opposite है. प्यूरिन और पिरिमिडिन रिप्लेस बाय अनदर मतलब क्या कि प्यूरिन बेस जो है, जैसे प्यूरिन में क्या आता है आपका, है ना, आपका आता है प्यूरिन में, है ना, एडेनिन एंड ग्वानिन. तो एडेनिन रिप्लेस होगा ग्वानिन से, ग्वानिन रिप्लेस होगा एडेनिन से. पिरिमिडिन में आता है आपका, है ना, साइटोसिन, यूरेज, साइटोसिन, थायमिन, है ना, तो एक में से रिप्लेस होगा. दैट इज नोन एज ट्रांजिशन. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या? यहाँ पे प्यूरिन डायरेक्टली पिरिमिडिन से रिप्लेस होगा और पिरिमिडिन प्यूरिन से रिप्लेस होगा. द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस पॉइंट म्यूटेशन. पॉइंट म्यूटेशन लीड्स टू, पहला एक है पॉइंट म्यूटेशन लीड्स टू. कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या? इसके रिजल्ट्स क्या होंगे? रिजल्ट्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशन. सो फर्स्ट वन इज अ साइलेंट म्यूटेशन. इसका रीजन है ना, कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉइंट म्यूटेशन लीड्स टू साइलेंट म्यूटेशन. साइलेंट म्यूटेशन क्या होता है? So in the silent mutation, codon of a mRNA. Codon of a mRNA. Codon मतलब क्या? There are 3 letter symbol, 3 base pair. A, C, A, C, A, like that. So cytosine, adenine, cytosine, adenine, thymine, like. No? So the codons on mRNA change the base may be code for same amino acid. तो अगर यहाँ पे म्यूटेशन हो गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक कोड है UCA. UCA code on a mRNA will code for one amino acid known as serine. So UCA code on a mRNA will code a amino acid serine. Serine amino acid को कोड करता है. But due to mutation, change in the base sequence, UCA मतलब क्या? यूरेसिल, साइटोसिन एंड, है ना, एडेनोसिन. UCA अगर ये चेंज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू रिप्लेस दैट A अगेन विद द U, तो UCU अगर रिप्लेस होगा A, ऐसे म्यूटेशन होगा UCU, तो विल आल्सो कोड फॉर द सेम अमीनो एसिड serine. नॉर्मली UCA, है ना, कोडॉन विल कोड फॉर serine and UCA is replaced by UCU.
जैसे यहाँ पे एडेनिन ये रिप्लेस हो चुका है कैसे, यूरासिल से, सिंगल बेस अल्टरेशन है ना, सिंगल बेस अल्टरेशन. So you will also code for serine, and this kind of mutation are not detectable. ये डिटेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि बोथ है ना, नॉर्मल कोडॉन एंड अल्टर्ड कोडॉन will code for same amino acid, so that's why it cannot be detected. So detect are serine, so therefore is not detectable, and that's why it is known as silent mutation. Silent क्यों बोलना है इसको, because इसमें क्या हो रहा है कि एक कोडॉन ऑन a mRNA which will code for a particular amino acid, and if there is a change in the base sequence, or if there is change in the base, so change the base again codes for same amino acid. जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल है, UCA will code for serine, and altered base, that is UCA, will also code for serine, and this kind of mutation is not detectable, and that's why it is known as a silent mutation. Silent mutation. Second type of mutation, second type of consequence of transposition is nothing but the missense mutation. Missense mutation. Now, इसमें क्या होता है, जो बेस चेंज होता है, चेंज द बेस में कोड फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड. अब चेंज द बेस में कोड फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड, जैसे मान लीजिए ना, लाइक UCA विल कोड फॉर सेरीन. यहाँ पे क्या कौन सा बेस अल्टर हुआ है ना, यहाँ पे U की जगह यहाँ पे है ना यूरासिल की जगह एडेनिन आ गया, ACA कोडॉन विल कोड फॉर अनदर अमीनो एसिड नोन एज थ्रियोनिन. So what is happening here? So in the silent mutation, so there is a change in the base sequence. Okay, so normal codon will code particular amino acid, and altered codon will also code particular amino acid. Right? Altered codon will also code for same amino acid. That's why, so detect the mutation is not detected. That's why known as a silent mutation. Missense mutation में क्या होता है कि altered codon may code for different amino acid, है ना, जैसे for example UCA will code for a serine, and altered codon, that is ACA, will code for threonine. A classical example of missense mutation is nothing but the genetic sickle cell anemia. बहुत सारे लोगों में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है, मतलब बचपन से ही होता है. सिकल सेल एनीमिया इज बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन, इट इज अ ड्यू टू द म्यूटेशन. एग्जाम्पल आपको याद रखना है, सिकल सेल एनीमिया इज एग्जाम्पल ऑफ मिसेंस म्यूटेशन. क्वेश्चन आ सकता है, ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं एक दो बार. नाउ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मतलब क्या, इट ऑकर्स व्हेन वन और मोर बेस पेयर आइदर दे आर इंसर्टेड इन द DNA और डिलीटेड फ्रॉम द DNA. आइदर एक या दो बेस पेयर डायरेक्टली ऐड होंगे या फिर डिलीट होंगे क्योंकि म्यूटेशन की वजह से, राइट, causing either insertion or deletion mutation respectively. So that is known as a frame shift mutation. If you want to, यहाँ पे बुक्स में डायग्राम भी दिया है उसका. Now next is a nonsense mutation. Nonsense mutation. तो ये क्या है, because of the altered base may become termination codon, है ना. अगर यहाँ पे जो बेस पेयर अल्टर हो रहा है यहाँ पे, है ना, अल्टरेशन समटाइम्स मे बिकम अ टर्मिनेशन कोडॉन. टर्मिनेशन कोडॉन मतलब क्या है, इज अ कोडॉन विच विल टर्मिनेट द प्रोटीन सिंथेसिस, also known as a nonsense codon. So because of the altered base may become termination codon or nonsense codon. For example, UCA, again UCA will code for a serine. UCA का किसके लिए कोड करता है, तो ये जो कोडॉन है will code for serine. Now altered base, alteration of this UCA, for example साइटोसिन की जगह अगर एडेनिन आ गया तो क्या होगा, UAA. So it is nothing but the termination codon or nonsense codon. Such kind of mutation is known as a nonsense mutation. Right. So major mechanisms of DNA repair. तो replication के बाद में क्या है कि DNA में भी
DNA, most of the time DNA is replicated with a high accuracy, high preciseness, but due to some reasons there might be change and there might be damage to the DNA. We have discussed the factors because of the different damages to DNA. So the damage if there, so most of the time 99%, if there is any damage to DNA, that is repaired by body itself, right? Repaired by body itself. And if it is not repairable, if the errors is not possible to correct, then the DNA is destroyed. So major mechanisms of a DNA repair, जैसे पहला है बेस एक्सीजन रिपेयर, एक्साइजन रिपेयर, बेस एक्साइजन रिपेयर, the damage to the single base due to the spontaneous alteration or by chemical radiation means, है ना, जैसे एक एखादा बेस अल्टर हो गया, डैमेज टू द सिंगल बेस ड्यू टू स्पॉन्टेनियस अल्टरेशन और बिकॉज ऑफ द केमिकल्स और बाय रेडिएशन. इन दैट केस डीएनए रिपेयर कैसे होगा? तो रिमूवल ऑफ दैट बेस, रिमूवल ऑफ बेस बाय the enzyme N glycosylase, removal of that base by N glycosylase, then a basic sugar removal or either replacement of the sugar. Now nucleotide excision repair, मतलब ये पूरा न्यूक्लियोटाइड ही निकल के फेंक देगा. बेस एक्सीजन रिपेयर मतलब क्या? बेस को ही रिमूव कर देगा, है ना. यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर मतलब या न्यूक्लियोटाइड पूरा रिप्लेस कर देगा. Damage to the segment of DNA by spontaneous or by chemical means, that leads to this type of damage. Now body will repair it. How? Removal of that DNA fragment, है ना, and replacement. Then mismatch repair. Mismatch repair में क्या होता है? Damage due to the copying errors, 1 to 5 base unpaired loops. अलग अलग बेस यहाँ पे मिसमैच हो गए तो रिमूवल ऑफ दैट स्ट्रैंड बाय एक्सोन्यूक्लिएजेस एंड रिप्लेसमेंट. डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर. एक्चुअली दीज थिंग्स आर ना, इतना डीप में नहीं पूछते जीपैट को, बट स्टिल ये मैं ले रहा हूँ. तो डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर, डैमेज कॉज्ड बाय ionizing radiations, radical and chemotherapy of cancer. So in this case body will do what? Body will do unwinding, alignment and ligation. So DNA break हो गया तो unwinding करेगा उसका body, either it will cause alignment or ligation. So these are some major mechanisms for DNA repair. Now structural genomics. Genomics means what? Genome means what? Genome means what? So the DNA, total amount of DNA in the body known as genome. Structural genomic refers to the structural modifies and complete protein structure of the body, that is structural genomics. Comparative genomics involves the study of comparative gene function and value. मेटाजेनोमिक्स इज स्टडी ऑफ जीनोम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कुछ टर्म्स है आपको मालूम होना चाहिए. प्रोटियोम मीन्स व्हाट? प्रोटियोम इज नथिंग बट द स्टोर हाउस ऑफ प्रोटीन ऑफ योर बॉडी. प्रोटियोम सेल्स रिपेरोटरीज मीन्स स्टोर हाउस ऑफ प्रोटीन एंड देयर नेचुरल एंड बायोलॉजिकल फंक्शन, विद देयर नेचुरल एंड बायोलॉजिकल फंक्शन. तो ये प्रोटियोम होता है. नाउ ट्रांसक्रिप्शन. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन? Transcription means the process of formation of RNA from the DNA. The process of formation of RNA from the DNA, in which the process in which RNA is synthesized from DNA, and the genetic information or genetic message in the DNA is expressed in the RNA. DNA डबल स्टैंडर्ड होता है. डबल स्टैंडर्ड DNA से RNA बनता है और जो DNA का मैसेज है वो RNA में आ जाता है ना. The product formed in the transcription is known as a प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. जो यहाँ पे आरएनए बनेगा ना ट्रांसक्रिप्शन से, उसको बोलेंगे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इट इज सब्जेक्ट टू पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, ये पूरा फंक्शनल आरएनए नहीं बना है
जो बनता है वो फंक्शनल आरएनए नहीं बनता, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है, उसके बाद में इट इज सब्जेक्ट टू पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, उसमें कुछ है ना 3' एंड के ऊपर टेल ऐड हो गए या फिर कुछ है ना प्रोसेस होगा टू प्रोड्यूस फाइनली एक्टिव आरएनए मॉलिक्यूल्स. सो बेसिकली व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा ऑफ योर लाइफ? So DNA of your cell is replicated and formation of identical copies of DNA is known as a replication. We have already seen from DNA, the genetic information from DNA is transmitted to a RNA. So RNA is made from DNA. DNA is double stranded, RNA is single stranded. The process is known as a transcription. Today we are going to see it. And from RNA, the message is expressed or translated into the proteins, and formation of synthesis of protein from RNA known as a translation, and the link between DNA, RNA and protein known as a central dogma of life. So we'll see the transcription, है ना. तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज लगता है आपको, क्या है ना. सो व्हाट डू यू नीड फॉर ट्रांसक्रिप्शन? सिंपल. आपको ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या है? ट्रांसक्रिप्शन मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए. तो आपको क्या क्या लगेगा? व्हाट विल बी द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन? पहला तो है डीएनए, तो यू नीड अ डीएनए. डीएनए लगेगा आपको, डीएनए, यू नीड अ डीएनए बिकॉज द डीएनए इज अ, है ना, यू नीड अ डीएनए. सेकंड, you need an enzyme. You need an enzyme. So what is the enzyme over here? So first of all, what is the requirement for the transcription? पहला requirement है DNA, दूसरा requirement है आपका enzyme. enzyme कौन सा होगा यहाँ पे? यहाँ पे enzyme है RNA polymerase. तो first requirement is the DNA, that is DNA to be transcripted. Then enzyme, that is a DNA polymerase, and then you need a बेस पेयर्स, है ना. बेस पेयर्स, है ना. बेस पेयर कौन से लगेंगे, है ना? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल, क्योंकि यहाँ पे थाइमिन नहीं होता है, राइट. तो यू नीड अ डीएनए, पेरेंट डीएनए और नेटिव डीएनए, देन यू नीड अ आरएनए पॉलीमरेज, देन यू नीड अ बेस पेयर्स for the synthesis of mRNA or synthesis of RNA from the DNA. So synthesis of RNA from DNA is known as a transcription, and you need an enzyme known as a you need an enzyme known as a RNA polymerase. RNA polymerase. So the RNA polymerase enzyme, or it is an active enzyme known as a hollow enzyme. It has a molecular weight of 4,80,000 Dalton. इसका molecular weight है, and ये enzyme it has a subunit, it has a subunit composition. So subunit, so RNA polymerase is composed of enzyme plus, है ना. hollow enzyme मतलब क्या है ना? hollow enzyme मतलब क्या है? तो प्रोटीन पार्ट, है ना, प्रोटीन पार्ट प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप, है ना, को एंजाइम प्लस प्रोटीन पार्ट known as a hollow enzyme. So co enzyme plus protein part known as a hollow enzyme. We have seen in the enzyme chapter. Now here the enzyme is a DNA polymerase, that is the protein part, but what is a coenzyme? So that is nothing but the different subunit. आपका RNA polymerase जो है उसमें subunit है, जैसे for example there are 2 alpha subunit in the RNA polymerase. उसका molecular mass है 40,000 Dalton, and it is a part of core of enzyme. core enzyme का ही part है आपका alpha subunit. And what is the role? So it will bind the RNA polymerase to the promoter region of the DNA. Again beta subunit क्या है? एक beta is a one beta subunit in the RNA polymerase which will have molecular weight of 1,85,000 Dalton. Again it is a part of core enzyme, है ना. इसका काम होता है nucleotide binding. It will bind a nucleotide. Third subunit of this RNA polymerase is the beta dash. Then one subunit होता है 1,60,000 Dalton molecular weight. It is also part of core enzyme. So it will help the enzyme to bind to it and bind to a template strand. Then another subunit is a sigma factor बोलते हैं उसको. That is also one
85,000 डेल्टा molecular weight है and responsible for the initiation of transcription, starting of transcription. तो आपका जो RNA polymerase enzyme है, RNA polymerase enzyme, so this is the RNA polymerase enzyme, right? So which will we have molecular weight of 48 है ना, 4,80,000 डेल्टन. उसके अल्फा बीटा बीटा डैश एंड सिग्मा ये सब क्या है, सब यूनिट्स है, उनके अपने अपने रोल है. सी नाउ, है ना. सो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. स्टेप्स क्या होंगे ट्रांसक्रिप्शन के. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज. फर्स्ट स्टेप क्या है, तो आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड टू द डीएनए. There is a formation of complex of RNA polymerase with the DNA. ये RNA polymerase है आपका DNA. Now second step is nothing but the initiation of transcription. Okay. Third step is nothing but the elongation. Initiation of transcription मतलब यहाँ पे RNA बनना चालू हो जाएगा. Initiation of transcription. Then elongation मतलब क्या है, वही RNA बढ़ेगा. So elongation. Then termination means stoppage, and after that the RNA polymerase enzyme will be separated, DNA will be removed, and your newly synthesized mRNA molecule or RNA molecule. Right? So overall steps of your transcription is nothing but the first step क्या होगा, formation of complex between the DNA and RNA polymerase. Second step is the initiation of transcription. Third step is the elongation. Fourth step is a termination. So these are the steps in the transcription of the transcription. Now we'll see step one by one. पहला step क्या है, the process of transcription. Initiation. पहला step है initiation. वो transcription initiation मतलब starting. Initiation मतलब क्या है, starting of transcription. How transcription will start, how transcription will initiate. So very first requisite is nothing but the binding of RNA polymerase to the DNA. सबसे मेन स्टेप क्या है, वन, a RNA polymerase enzyme should bind to the DNA, then only DNA will be transcripted. So first step is the binding of RNA to the DNA. Then now RNA polymerase enzyme will bind to the DNA, not anywhere, है ना. कि RNA DNA का मॉलिक्यूल तो बहुत है ना बड़ा है, वहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि कहीं पे भी जाके बाइंड करेगा. तो RNA polymerase will find a particular region on a DNA known as a promoter region. So RNA polymerase will bind to a specific regions of the DNA, and that region is known as a promoter region. So RNA polymerase will bind to the DNA will at a particular region known as a promoter region, है ना. So ये region क्या होता है, there are two base sequence on the DNA strand. There are particular base sequences on the DNA strand. DNA में दो strand होता है ना, DNA is a double stranded. तो DNA double stranded है तो उसमें का है ना, DNA is a double stranded. So one strand is known as a coding strand and one strand is known as a template strand. So genetic information is present on the template strand, right? So promoter region is also present on that strand. ठीक है, तो क्या होगा कि RNA polymerase will bind to the promoter region. Promoter region क्या है, कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं. There are two base sequences, दो टाइप के sequences होते हैं वहाँ पे on a coding strand of DNA, to which sigma factor of your RNA polymerase will recognize, है ना, to which sigma factor of RNA polymerase will recognize. Now what are these sequences? कि जो कोडिंग DNA होता है उसके ऊपर ये सीक्वेंस होता है, कौन सा, पहला रिबनोबॉक्स और ऑल्सो नोन एज टाटा बॉक्स. रिबनोबॉक्स और टाटा बॉक्स, इसमें क्या है, दिस इज अ वन ऑफ द प्रोमोटर रीजन. देयर आर टू प्रोमोटर रीजन. प्रोमोटर रीजन मतलब क्या, एक काइंड ऑफ बेस पेयर सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन द DNA to which RNA polymerase will bind.
आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे बाइंड नहीं करता, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के ऊपर बाइंड करता है. सो प्रिब्नो बॉक्स और टाटा बॉक्स, तो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ 6 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स. जैसे यहाँ पे लिखा है TA मतलब क्या है ना, थाइमिन एडेनिन थाइमिन एडेनिन एडेनिन थाइमिन. तो अगर ये सीक्वेंस डीएनए में कहीं पे भी होगा, वहां पे क्या आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा. कहीं पे भी बाइंड नहीं होगा मुंह उठा के. तो आरएनए पॉलीमरेज, द सिग्मा फैक्टर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज will recognize the promoter region on the DNA. One of the promoter region is a Pribno box or Tata box. So it is a sequence of 6 base pair nucleotide located near to the point of transcription. Another promoter region is nothing but the 35 sequence. 35 sequence एक है second promoter region है on the DNA. Now it has a base pair sequence like this TTGACA, मतलब thymine thymine guanine adenine cytosine adenine, which is located about the 35 bases upstream. मतलब starting point of transcription से पहले 35 bases के आगे 35 bases आगे ये region होता है, to which RNA polymerase will bind. तो initiation मतलब क्या, initiation of transcription. So binding of RNA polymerase to the DNA at a particular region known as a promoter region. There are two type of promoter region, Pribno box or known as also known as Tata box, or second is the 35 sequence to which RNA polymerase will bind. Now who will recognize these sequences? The promoter region recognition का काम किसका है, sigma factor of your RNA polymerase. So will recognize and will bind to the DNA at this portion, and there is a इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन मतलब पहले है ना, जैसे मान लीजिए ये क्या है, लास्ट वाला बेस क्या है, यहाँ पे टाटा बॉक्स का लास्ट का बेस पेयर क्या है, तो एट द टाटा बॉक्स लास्ट वन इज अ थाइमिन. तो इसके अपोजिट वाला बेस पेयर, सो द कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ अ थाइमिन इज एडेनिन. सो एडेनिन विल बी कॉल्ड फर्स्ट एट द 3' एंड ऑफ द दिस RNA है ना, at the 5' end. Now next base will be according to the DNA template strand. टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर अगर वहाँ पे गुआनिन होगा तो यहाँ पे साइटोसिन होगा, वहाँ पे अगर है ना थाइमिन होगा तो यहाँ पे यूरेसिल ऐड किया जाएगा, like that. Base pairs are required, right? Now elongation means what? So here is actually synthesis of RNA. So holoenzyme RNA polymerase recognizes the promoter region and the sigma factor will release, and then transcription will start. Now RNA is synthesized from 5' to 3' end, which is anti-parallel to the DNA template. DNA का जो template है उसके anti-parallel होगा. जैसे डीएनए का टेम्पलेट है ना 3' टू है ना 5' है, तो यहाँ पे 5' टू 3' ये सिंथेसिस होगा. मतलब जैसे कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होता है डीएनए का, उसी तरीके से यहाँ पे आरएनए बनता है. सो आरएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम 5' टू 3' डायरेक्शन एंटी पैरेलल टू द डीएनए टेम्पलेट बाय द आरएनए पॉलीमरेज व्हिच यूजेस एटीपी जीटीपी सीटीपी यूटीपी. ये क्या है, एडेनोसिन ट्राई है ना, एडेनाइलेट, गुआनाइलेट, साइटाइलेट एंड यूराइडेनाइट. मतलब ये बेस पेयर्स हैं. दे आर यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए. अपॉन एडिशन ऑफ ईच न्यूट्रल ट्रेड न्यूक्लियोटाइड टू द ग्रोइंग चेन पायरोफॉस्फेट मोइटी इज रिलीज्ड. मतलब मीन्स व्हाट, जो डीएनए है, जो कोडिंग जो टेम्पलेट चार्ट है, उसके ऊपर जो बेस पेयर सीक्वेंस है उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर ऐड करते जाएगा डीएनए पॉलीमरेज. ये यहाँ से लेके ऐड करते जाएगा, राइट. और डीएनए है ना, डीएनए पॉलीमरेज डज नॉट हैव एनी प्राइमर. डीएनए पॉलीमरेज डज नॉट हैव एनी प्राइमर एंड आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट हैव एनी प्राइमर एंड डज नॉट हैव एनी एक्सो एंड एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी. मतलब so if you see the
replication DNA polymerase 3 was having exonucleases activity and endonucleases activity. मतलब if replication some errors are there, so it can be corrected. Proofreading activity was there for the DNA polymerase 3, but no such kind of proofreading activity is there in this RNA polymerase. तो RNA polymerase को proofreading activity है ही नहीं. अगर गलती हो गया तो हो गया, है ना. Due to lack of proofreading activity, RNA, है ना, RNA does not have ability to repair the mistakes. तो RNA synthesis में अगर कोई mistake हुआ है तो it cannot be repaired because this RNA polymerase does not have any proofreading activity as that of the DNA polymerase 3. So first step of RNA synthesis, there is a transcription, so initiation, then, है ना, then elongation. यहाँ पे क्या क्या एंजाइम आपको याद रखना है, ये, है ना, प्रोमोटर रीजन क्या होता है ये याद रखना है, राइट. कौन सा फैक्टर बाइंड करता है, सिग्मा फैक्टर, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी गेट में. देन एंजाइम याद रखना है आरएनए पॉलीमरेज. सो फॉर द रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज इज द एंजाइम, फॉर द ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज इज द एंजाइम, राइट. थर्ड स्टेप इज द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. टर्मिनेशन मतलब क्या, स्टॉपेज. टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. नाउ टर्मिनेशन as transcription process. So when termination signal is come, so transcription process is stopped by termination signal. So termination signals there are also two types. जैसे promoter region होता है ना, स्टार्ट कहाँ से करेगा ट्रांसक्रिप्शन, promoter region जहाँ से होगा वहाँ से स्टार्ट करेगा. स्टॉप कहाँ पे होगा, जहाँ पे टर्मिनेशन सिग्नल आएगा. तो promoter region टर्मिनेशन सिग्नल एक क्या है क्या. So it is a kind of base pair sequence. यहाँ पे बेस पेयर सीक्वेंस रहेंगे पर्टिकुलर, दैट इज उसी के बेस पेयर सीक्वेंस के बाद में चालू हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, और कुछ पर्टिकुलर बेस पेयर सीक्वेंस आया तो वहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा. ठीक है. सो देर आर टू टाइप ऑफ टर्मिनेशन सिग्नल्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन. फर्स्ट वन इज नोन एज अ रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन. रो क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स नोन एज अ रो फैक्टर that will bind to a growing chain of RNA. ये प्रोटीन्स बाइंड करेंगे growing chain of RNA के लिए and terminate the process, the transcription, and also responsible for the dissociation of RNA polymerase from DNA. Second termination signal होता है, second termination signal is a row independent termination. row independent termination. यहाँ पे क्या होता है, there is a formation of hairpins. मतलब hairpins मतलब एक particular sequence आएगा, palindromic sequence, है ना, which of the newly synthesized RNA early termination is brought out. This is due to palindromes. palindromes मतलब क्या, कुछ words होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैडम, है ना, या फिर रोटर, ROTOR, रोटर वर्ड जो है ROTOR, ये वर्ड है. आप इसको कैसे भी पढ़ो, यू कैन रीड फ्रॉम फॉरवर्ड डायरेक्शन. अगर आप इसको, है ना, यू कैन रीड दिस वर्ड इन दिस डायरेक्शन, यू विल गेट ROTOR, रोटर. और वही वर्ड आपने इस डायरेक्शन में रीड किया तो अगेन ROTOR, रोटर. तो सच काइंड ऑफ सीक्वेंस, है ना, ATTAG, है ना, लाइक दिस. सच काइंड ऑफ सीक्वेंस आर नोन एज अ पैलिंड्रोम्स. तो, है ना, अनदर वर्ड इज देयर मैडम, MADAME, है ना, मैडम जो है, तो वो भी अगर अपोजिट एंड से भी आपने चालू किया तो भी मैडम ही हो जाएगा. रोटर इज ऑल्सो पैलिंड्रोम, मैडम इज ऑल्सो पैलिंड्रोम. सो if palindromic sequence is reached in the DNA, so that is a stop signal or termination signal to the transcription. तो यहाँ पे देखो आउटलाइन ऑफ दिस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. यहाँ पे देखो इस RNA पॉलीमरेज, है ना, सिग्मा फैक्टर ऑफ RNA पॉलीमरेज will
will recognize the promoter region, that is a 35 Pinbo start box or Tata box. Then what will happen? The sigma factors will be sigma factor. What we need to, it will bring about the separation of DNA strands. It will bring about the separation of DNA strand or formation of transcription bubble. So it will bring out the separation of this DNA strand, and there is a formation of transcription bubble. Okay. You can see over here. So this is known as a promoter region, initiation point. Promoter region यहाँ पे bind हो गया आपका sigma factor and core enzyme. Now enzyme will do its function. ये क्या करेगा? As per the complementary base pairs of template strand, it will add one by one base pairs, and there is a and then this is known as a termination signal. तो start signal कहाँ पे? यहाँ पे initiation point and termination point. So this is known as a coding region. इतना लेंथ का आपका RNA बने. So chain elongation, you can see sigma factor released, and after that when the termination sequence will reach, at that time there is a release of core enzyme and RNA. यहाँ पे RNA release हो गया and core enzyme release हो गया. So outline of your transcription, again you can see over here same thing. जैसे for example यहाँ पे देखो, this is known as a Pinbo, है ना. यहाँ पे देखो DNA है ना, 5' end 3' end, 5' end 3' end. One is known as a coding strand, one is known as a coding strand, one is known as a template strand. So the genetic information is found in the, it is found or residing in the template strand. टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है. नाउ द RNA polymerase enzyme, the sigma factor of that polymerase enzyme, RNA polymerase, will recognize the sequence. So they recognize these two sequence. एक तो है 35 sequence, दूसरा हो गया Pino box और Tata box. ये sequence recognize करेगा DNA के ऊपर, यहाँ पे bind करेगा, and है ना, it will bind and it will cause separation of two strands. यहाँ पे strand separate हो जाएंगे, है ना, just है ना below behind the 10 base pair, है ना. Actual coding region ये है, coding of gene region. तो ये जो template strand है उसका. Now you can see over here same thing. ये DNA है आपका double stranded, यहाँ पे एक coding strand, ये template strand. Now RNA कैसे बनेगा? So RNA बनेगा जो आपका टेम्पलेट स्टैंड है उसके कॉम्प्लीमेंट्री. यहाँ पे देखो टेम्पलेट स्टैंड पे यहाँ पे क्या है? थाइमिन, तो उसके अरेंज में यहाँ पे क्या है? एमिन. यहाँ पे क्या है? गुआनिन, तो उसके अरेंज में साइटोसिन. दिस यहाँ पे एडेनिन आया तो थाइमिन होना चाहिए, बट RNA में क्या होता है? यूरासिल लगा है. राइट. सो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर विल बी एडेड एंड RNA इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम 5' to 3' end. तो सेम थिंग यहाँ पे again same thing is explained over here, outline. Same thing over here again. ये देखो DNA double stranded DNA. So this is known as a promoter site or promoter region. Then transcription unit, मतलब ये यहाँ पे DNA इतना DNA का ट्रांसक्रिप्ट होगा, मतलब इतना RNA बनेगा. This is known as the termination site. So the enzyme will bind the sigma factor and the RNA polymerase will bind to the promoter region. ये promoter region के ऊपर bind होगा DNA के. Then sigma factor will release. Sigma factor क्या करेगा? यहाँ पे separation करेगा, and then RNA polymerase will add a base pairs according to the template strand. Then elongation will be there, and termination signal will, when termination signal will come, जैसे यहाँ पे termination signal आ गया, यहाँ पे termination signal आ गया, so there is a stopping of this transcription. So newly synthesized RNA will be released, and DNA will be again back to the its position.
Now there are some antibiotics which inhibit the transcription. ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करने वाले कौन से एंटीबायोटिक है? तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए. ट्रांसक्रिप्शन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए. ओके. एंड ट्रांसलेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए. तो इनहिबिटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कौन करता है? कौन? फॉर एग्जाम्पल सेवरल एंटीबायोटिक्स दे inhibit the transcription process. For example, rifamycin. Rifamycin is a category of antibiotic. In that you have rifampicin, anti-tubercular antibiotic. Rifampicin. तो इसका mechanism होता है, it will block the or it will inhibit the DNA dependent RNA polymerase. So rifamycin and streptoviracin, they will bind to the beta subunit of RNA polymerase and it will block the transcription in the bacteria. Then actinomycin D is also there, anti-cancer antibiotic होता है actinomycin D. It will form a complex with the standard DNA and prevent the movement of core enzyme. As a result of this, there is an arrest or there is a stopping of chain elongation during the transcription. Then streptoglidin again bind to the beta subunit of prokaryotic RNA polymerase and thus inhibit the elongation. Then heparin क्या है? Heparin is a natural anticoagulant. Still, it is a polyanion that binds to beta subunit and inhibit the transcription in vitro. ये in vitro test tube में transcription inhibit करता है. In vivo don't know. Inhibitor of transcription. Right. तो याद रखना है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंड आरएनए विल नॉट ओबे द चारगाप रूल. डबल स्टैंडर्ड डीएनए and double standard RNA in the certain viruses, they are also genetic material, they will obey. Now formation of RNA from DNA, that is transcription, and it is a one way process. एक बार DNA से RNA बन गया तो RNA से DNA नहीं बनता है. But in a certain viruses you have genetic material known as RNA. कुछ viruses में genetic material ही क्या है? RNA है. तो in that case तो उसमें देखो certain viruses has a RNA as genetic material, right? And they can, for example, oncogenic viruses, so they have one enzyme known as a RNA dependent DNA polymerase. RNA dependent DNA polymerase, also known as the reverse transcriptase. मतलब ये viruses क्या करते हैं? हम the RNA DNA बनाते हैं back. तो DNA to RNA बनता है, that is a forward process or unidirectional process. But in the some viruses you have RNA as genetic material, and from that RNA DNA is made by reverse transcriptase enzyme, right? So they will synthesize the DNA which is complementary DNA with the viral RNA by reverse transcriptase. जैसे आपका HIV वायरस जो होता है, एड्स का वायरस, HIV वायरस is also retrovirus which has a reverse transcriptase enzyme, मतलब नॉर्मली डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, और वो प्रोसेस यूनिडायरेक्शनल है, अपोजिट नहीं है. बट इन सम वायरसेस आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, और वो आरएनए से पहले डीएनए बनाते हैं, फिर डीएनए का रेप्लिकेशन करते हैं, और रेप्लिकेशन करने के बाद में फिर से डीएनए का आरएनए बनाते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं, और उनका तो वायरस का स्ट्रक्चर बनता है. So these viruses are known as a retroviruses or oncogenic viruses. Now, as I told you, RNA also has a some catalytic function last time. उसमें है rRNA, so responsible for the peptide bond formation and protein synthesis. Then RNase P, responsible for the RNA cleavage and ligation. RNA को post transcriptional modification में ये enzymes काम आते हैं. सेल्फ स्प्लाइसिंग RNAs, डीएनए का ब्रेक डाउन करते हैं. RNAs एज अ स्प्लाइसोम, तो RNA स्प्लाइसिंग के काम आते हैं. इन विट्रो सिलेक्टेड RNAs, जिससे RNA पॉलीमराइजेशन के लिए, RNA फॉस्फोराइलेशन के लिए, RNA
अमाइनो ग्लाइकेशन के लिए, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, है ना। मतलब आरएनए कैन बी ए जेनेटिक मटेरियल, जैसे वायरस में होता है आरएनए जेनेटिक मटेरियल। देन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, अबे जो आरएनए बना है, व्हाट एवर आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, इट इज नोन एज अ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. So whatever RNA is made from transcription process, that is known as a primary transcript. That RNA is not a functional RNA. ये जो RNA बना है ये functional RNA नहीं है. अभी ये क्या है, raw RNA है, जैसे raw material है ना, जैसे बना है ना, आपने क्या किया, raw RNA बनाया, अभी उसको modification करना है, उसको तरसना है, ठीक है. So functional RNA is made from the raw RNA. So RNA is synthesized as a HNRNA, heterogeneous nuclear RNA. HNRNA बनता है, उसके बाद में उसका mRNA, tRNA, rRNA है ना, वो बनता है डिपेंडिंग अपॉन द मॉडिफिकेशन. सो दैट इज नोन एज अ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स नीड्स टू बी मॉडिफाइड. एंजाइम्स लाइक राइबोन्यूक्लियेजेस, they are involved in the processing of tRNA and rRNA in the both prokaryotes and eukaryotic cells. tRNA में क्या आता है, ट्रिमिंग कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग बेसिस इनटू अनयूजुअल वन. tRNA में क्या है कि एक है ना डीऑक्सीयूरिडीन एक आम होता है, उसमें डीऑक्सीयूरिडीन बेस होता है, तो वो बनाने के लिए वो ऐड किया जाएगा. इन एडिशन ऑफ CA एट 3' एंड. tRNA में ना क्लोवर लिप जैसे होता है ना, डिफरेंट आर्म्स होते हैं इसमें, और एक आर्म जैसे 3' एंड के लिए ये कैप ऐड करना जरूरी है, CAA एंड. देन प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स नीड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. rRNA is also subjected for the post transcriptional modification. mRNA ये इंपॉर्टेंट है. तो mRNA में क्या मॉडिफिकेशन होते हैं, तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज मॉडिफाइड टू बिकम अ mRNA. तो फर्स्ट जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना है आपका, पहला जो RNA बना है आपके ट्रांसक्रिप्शन के बाद में, this primary transcripts need a modification. For example, first, so in a mRNA you have at the 5' end you have capping, that is a 7-methylguanosine. 7-methylguanosine ये 5' end में mRNA में होता है. तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में जो RNA बना है उसमें तो नहीं है, तो you have to add. Okay, so you don't have to add but body will add, right? So addition of 5' है ना, addition of 5' cap with the 7-methylguanosine 5 to 5' linkage, it is required for the translation and stability of mRNA. Then as yes, adenosyl methionine is a donor for this methyl group. Then there is addition of poly-A tail, and again to stabilize the mRNA, adenosine nucleotide is added at 3' end to the primary transcript. तो ये क्या है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. देन थर्ड इज रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड एडिशन ऑफ एक्सट्रॉन. इंट्रॉन्स क्या होते हैं, इंट्रॉन्स है ना, इंट्रॉन्स आर द पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड इन mRNA which will does not code for any protein, so they must be removed. They are removed by and it is done by small nuclear ribonuclear particle, that is a SNRPS. Exons क्या होते हैं इन mRNA है ना, that must be added, exons must be added. Beta thalassemia is due to the faulty splicing of HNRNA. तो एक डिसीज होता है बीटा थैलेसेमिया, that is because of the है ना faulty पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. ये हुआ आपके ट्रांसक्रिप्शन. टुमारो वी विल सी दिस द है ना. चलो आज ही देख लेते हैं जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड क्या है, जेनेटिक कोड इज नथिंग बट द इट इज अ सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड. जेनेटिक कोड क्या है, और जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड बेस्ड सीक्वेंस इन अ mRNA. 3 न्यूक्लियोटाइड बेस्ड सीक्वेंस इन ऑन अ mRNA that will code a particular amino acid, जैसे UGA, UAG है ना, ये जो कोड होते हैं, जैसे ये बोला CA. तो these 3 nucleotide based sequence
on a mRNA that will code a particular amino acid. There is a code word for a particular amino acid and internals protein, which is nothing but the genetic code or simply a codons. The dictionary of nucleotide bases. Nucleotide bases कितने हैं? ये adenine, guanine, cytosine and uracil. आप बोलेंगे सर थाइमिन क्यों नहीं? थाइमिन इज ओनली प्रेजेंट इन द डीएनए, नॉट इन आरएनए. यहाँ पे आरएनए से प्रोटीन बनेगा और इसकी कोड क्या रहेंगे? ए जी सी. विल डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रोटीन. कि प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम mRNA. So whatever codes, whatever information on a mRNA is there, that will be translated. That will be translated in the form of proteins. Yeah. So the codes on mRNA, the three letter that will code for a particular amino acid. 3 nucleotide base sequence will code for a particular amino acid known as the codons, and that is nothing but the genetic code. Okay? That is nothing but the genetic code. तो द 3 कोडॉन्स है ना. तो ये अपन जेनेटिक कोड पहले देख लेते हैं क्या है. तो दिस इज नोन एज जेनेटिक कोड, राइट. तो देखो यूरासिल इज देयर फर्स्ट बेस एट अ 5' एंड, है ना. mRNA क्या है? इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड. एक आएगा आपका 3' एंड, तो एक आएगा आपका 5' एंड. फर्स्ट बेस एट 5' एंड इज यूरासिल. Second is a guanine, third one is a adenine, and fourth one is a guanine. So there are 4. So now the possible combination of these base pairs, क्या क्या हो सकते? There are 64 codes. कितने? 64 codes that will code only 21 amino acid. There are multiple codes for a सेम अमीनो एसिड आल्सो नोन एज ओवल हाइपोथेसिस. ठीक है. तो देखो है ना, यहाँ पे ऐसे लिखो एंड है ना सेकंड बेस है ना, मिडल वन, सेकंड बेस, फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस, फोर्थ बेस. 3' एंड के ऊपर ये होगा. अब देखो है ना, यू अगेन ये यू ले लो, यू यू यू. First base is U, second is U, third is U. No, first is U, second is U, third one is a C. First one is U, second one is U, third one is a A. First one is U, second one is a U, third one is a G. So U U U U U G will code for phenylalanine. U U A U U G will code for leucine amino acid. Likewise in this बॉक्स ऑल्सो. तो पहला U ले लो, सेकंड वन ले लो, ये क्या है? C, U C U, है ना. देन सेकंड वन गया U C U, बाद में गया U A U C U, बाद में U C A, बाद में U C, UCG. तो दैट विल कोड फॉर सेलिन. वैसे ही यहाँ पे UAU UAG दैट विल कोड फॉर ट्रिप्टोफैन, एंड UAG that is they are known as nonsense codon or stop codon. Likewise this there are 64 combination. यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन है? 64 कॉम्बिनेशन. There are 64 codon which will code for particular 21 amino acid. यहाँ पे 21 amino acid के लिए कोड करेंगे 64 कोडन. That's why few codons will code same amino acid. जैसे okay, so one amino acid can be coded by multiple codons. जैसे यहाँ पे ना सेलिन के लिए कौन कोड कर रहा है? AUG AGC. लेकिन ये भी देखो ये कितने हैं? All these will code for serine and this will also code for it. So for a one amino acid there might be multiple codon. Okay? There might be multiple codon. So known as a Hubble hypothesis. Some codons are known as a stop codon or nonsense codon. जैसे ये 3 है, UAA, UAG and UGA.
There is a nonsense codon or stop codon. And initiation codon for protein synthesis is nothing but a U, is known as a AUG. AUG will code for methionine, and it is known as a starting codon or start codon or initiation codon for protein synthesis. और उसका AUG will code for methionine. That's why during the protein synthesis, first amino acid that is being called is a methionine. ठीक है, तो ये genetic code क्या है? So three codons, namely UAA, UAG and UGA, known as Umber, Ocher and Opal. You might have seen in the 12th also. These three codons are known as a termination codons or nonsense codons. Or termination codons or nonsense codons or stop codon. mRNA is read during the protein synthesis. mRNA is read from 5' to 3' chain, and the codons AUG and CUG are the initiation codon that will code for methionine. Now features of genetic code. Genetic code की एक feature है तो universality. First feature होता है universality. तो same codon will code for only one amino acid in all living organism. तो अगर एक है AUG है तो that will code only for methionine, right? So that is a universality. Same codon will code for a same amino acid in the all living organism. But there are some few exceptions also. जैसे यहाँ पे AUA that will code a methionine in mitochondria, but will code the isoleucine in the cytoplasm. ये एक exception है. Specificity. Genetic code is a specific for a specific amino acid. Then genetic code is also non-overlapping. The code is read from fixed point as a continuous space sequence, and addition or deletion of one or more bases will change the message sequence on a mRNA, called as a mutation. Fourth, the genetic code is a degenerate. Most amino acid will have most amino acid will have more than one codon, because there are 61 codon available which will code only 21 amino acid. That means multiple codons will code the same amino acid. Codons on a mRNA will be recognized by anticodon on tRNA. Opal hypothesis is given by Crick. The tRNA can recognize more than one codon due to third base at a 3' chain. This explains the divergency in genetic code. This shows the existence of multiple codon for a single amino acid. This is known as the Opal hypothesis. So tomorrow we'll start the protein synthesis. तो एक बार आप बुक में से भी एक बार पढ़ लो. Whatever is important for GPAT, I have taken that. तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही कम बार आता है, लेकिन आ गया तो कि व्हाट इज अ इनिशिएशन पॉइंट, मतलब व्हाट इज अ प्रोमोटर रीजन, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको. देन RNA पॉलीमरेज एंजाइम एंड इट्स सब यूनिट, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है ना. या फिर आपको जेनेटिक कोड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है ना. या फिर आपको इसके ऊपर भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, एक बार मैं बोलना यहाँ पे भूल आया हो, फॉरगॉटन दिस. पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ mRNA, ये इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. 5' कैपिंग with the 5-methyl guanosine, poly A tail addition at a 3' end, and removal of introns and exons. इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. ठीक है, तो टुमारो I will explain tomorrow from this slide. So tomorrow we'll see the proteins in this part 1 and part 2. तो कल अगर पॉसिबल है तो कल ही फिनिश करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस नोन एज अ ट्रांसलेशन. तो सी यू टुमारो. अगर कोई डाउट है तो आप you can ask me personally, you can comment.